Hello friends, today my topic is Dalton atomic theory. John Dalton in 1808 published a new system of chemical philosophy in which he proposed atomic theory of matter. Now the main points of Dalton atomic theories are: number 1, matter is made up of extremely small indivisible particles called atom. नाउ 1808 में जॉन डल्टन एक थ्योरी दी थी रिगार्डिंग द एटम, जिसके जो मेन पोस्टुलेट्स उस थ्योरी के थे, द नंबर 1 इज कि मैटर जो है मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स. वी कांट सी दैट with our naked eye, and that small particles are called atom. Now number 2, atom of a given elements are identical in all respects. Now अगर हम एक आइडेंटिकल एलिमेंट्स के एटम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, देन इन एल्यूमिनियम शीट ईच एंड एवरी पार्टिकल इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड दे हैव द सेम साइज, शेप, mass and chemical properties. Now number 3, atom of different elements are different in all respects. They possess different shape, size, masses and chemical properties. Now different elements की different properties होती हैं. नंबर 4, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वे कंबाइन विद ईच अदर इन अ फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म कंपाउंड्स. भाई सिंपल होल नंबर रेशो से एटम्स कंबाइन करेंगे जिससे क्या बन जाएगा, कंपाउंड्स बन जाएंगे. नेक्स्ट, atoms can't be created nor be destroyed. Now Dalton theory could explain the law of chemical combination. Now the next topic is atomic mass and the molecular mass. Now the atomic mass. Now what is atomic mass? Now atomic mass, atom mass. So how can we define the mass of an atom? So atomic mass can be defined as a mass of a single atom which is measured in atomic mass unit. एक सिंगल एटम के मास को क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, और यूनिफाइड मास दैट इज U. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. 1 कार्बन 12 एटम के 1/12 पार्ट को हम क्या बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट. Now second is the molecular mass. Now the molecular mass is the sum of all the atomic masses of the elements present in a molecule. It is obtained by multiplying the atomic mass of each element by the number of its atoms and adding them together. Now molecular mass can be expressed in grams, is known as gram molecular mass. For example, here the example is the methane. Now formula of methane is CH4. Formula of methane is CH4. Now we have to calculate the molecular mass of the methane, then we have to add carbon and hydrogen. But the hydrogen has 4 atoms, then multiply the hydrogen with 4. So carbon plus 4 hydrogen. Now the carbon mass 12, hydrogen mass 1 multiplied by 4, then it is equal to 16. Now the molecular mass of methane is 16. Now the mole. Now next concept is mole. Now what is mole? As I have told you earlier that 1 mole is the amount of substance that contain as many entities as number of atoms in exactly 12 gram of carbon 12. तो मोल क्या होता है, मोल एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसके अंदर उतनी ही एंटिटीज होती हैं जितनी कार्बन 12 में, एग्जैक्ट 12 ग्राम कार्बन 12 में होती है. तो नंबर ऑफ एटम इन कार्बन 12 इज इक्वल टू 6.022 10 to the power 23, and this 6.022 into 10 to the power 23 is also called the Avogadro number. Now next is the chemical formula. Now symbolic representation of a compound. जब आप किसी कंपाउंड को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट यू राइट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड
HNO3. Now this is called the chemical formula. Now it is of following types. Generally, chemical formulas can be written in the form of two types. First is the empirical formula. Second is the molecular formula. Now, what is empirical formula? Now, empirical formula represent the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. पे सिंपल होल नंबर रेशो मिल जाएगा आपको सभी एटम्स का जो एक कंपाउंड में होते हैं. नाउ बी इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताएगा डिफरेंट एलिमेंट्स के किसके अंदर कंपाउंड्स के अंदर. नाउ अगर इन दोनों में रिलेशनशिप देखें तो नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू empirical formula multiply by n where n may be 1 2 3 4. Now next is the measurement of concentration. Now the concentration of a solution reflect the relative proportion of the solute and solvent present in a solution. Now concentration means how much amount of solute or the solvent present in a given solution. Now first method is weight percentage, that is W by W percentage. Now W by W means weight of the solute upon the weight of the solution, but both are in the gram. That is called W by W percentage. Now volume percentage, volume of the solute divided by volume of the solution multiplied by 100. Now both are in the ml. That's why they are the volume percentage. Now next term is molality. Now what is molality? Now molality always be represented by small m. Now what is molality? Number of moles of solute. मतलब कितने मोल्स सोल्यूट के डिजोल्व हैं किसके अंदर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में. मीन्स 1 kg सॉल्वेंट अगर आपको दे दिया जाए तो आपने कितने मोल सोल्यूट के उसके अंदर डिजोल्व कर रखे हैं वो उसका क्या कहलाएगा आपका मोलैलिटी. Now the molality can be calculated by this formula that small m is equal to number of moles of solute divided by mass of the solvent and that will be in the kg. Now next is molarity. Now what is molarity? Now number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. जबकि molality क्या थी? Number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में देखेंगे दैट इट मीन्स यू कैलकुलेट द मोलैलिटी. लेकिन अगर आप सोल्यूट को 1 kg सोल्यूशन 1 लीटर सोल्यूशन में देखेंगे तो वो आपकी क्या आएगी मोलैरिटी. नाउ नेक्स्ट इज द मोल फ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज मोल फ्रैक्शन? नाउ हियर द मोल फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स of any of the component of the solution, means maybe solute or maybe solvent, to overall solution. Now how can you calculate it? Now the mole fraction, can you calculate it? Firstly, if suppose in a solution you have to calculate the mole fraction of solute, so how can you calculate? The number of moles of solute, that is represented by x, where x is the mole fraction of solute. How can you calculate it? Number of moles of solute divided by total number of moles of solute plus solvent, or you can say total number of moles of solution. Now if you want to calculate the mole fraction of the solvent, then which is equal to number of moles of solvent divided by total number of moles of solution, because both mole fraction of solute plus mole fraction of solvent always be equal to 1. Now here is the normality. Now what is normality? Firstly you see the molality, second you see molarity, now third one is the normality. In case of molality, amount of solute or the moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. Molarity, moles of solute dissolved in 1 liter of the solution. But in case of normality, number of gram equivalents of solute, कितने ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट के डिसॉल्व है किसके अंदर 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर. नाउ दिस इज कॉल्ड नॉर्मैलिटी. नाउ योर नेक्स्ट इज लिमिटिंग reagent. Now what is limiting reagent?
देखो बच्चे, नाम इंडिकेट कर रहा है, लिमिटिंग मीन्स लिमिट है, कम अमाउंट में। तो जब भी आपको कोई रिएक्शन दी जाती है एंड यू गॉट द रिएक्टेंट फॉर while performing that reaction, in if you have two or more reactant, then in that reactant, if any of the reactant which is present in the small amount, and that small amount reactant is called limiting reagent. The limiting reagent is the reactant which is completely consumed in a reaction. Clear? क्यों क्यों कंज्यूम्ड हो गया वो रिएक्शन में? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट. टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिमिटिंग एजेंट शुड बी नोन. If you want to know the how much product is formed in a chemical reaction, so you have to know the limiting reagent. For example, N2 plus 3H2 give rise to NH3. Here you can say 1 mole nitrogen react with 3 mole hydrogen to form 2 moles of ammonia. This is a simple standard equation. Clear? But here if I give you that 1 mole of nitrogen, I'll give you 0.5 moles of nitrogen. Now here you need 1 mole, but I'll give you 0.5. So that means nitrogen is the limiting reagent. Now next is physical properties. Now what is physical properties? Physical properties are those can be measured or observed without changing the identity or the composition of the substance. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे? कि फिजिकल प्रॉपर्टी वे होती हैं, वे प्रॉपर्टीज होती है जिनको आप मेजर करते हो या ऑब्जर्व करते हो, लेकिन उस सब्सटेंस की आप कॉम्पोजिशन नहीं बदलेंगे और आइडेंटिटी को नहीं बदलेंगे, तो वो क्या कहलाएंगी? आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑल दीज आर द physical properties. Now next is the chemical properties. Now chemical properties are those in which a chemical change in a substance occur. अगर आपकी रिएक्शन में केमिकल चेंजेस आ रहे हैं और रिएक्शन इरिवर्सिबल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज और द केमिकल प्रॉपर्टी. Now here the physical quantity consists of two parts. One is number, one is unit. Now suppose I'll give you a number that is 4.5 kg. Here the 4.5 is the number and kg is the unit. Now what is this unit? Now unit is defined as I have told you earlier that we have the 7 basics unit. The unit is defined as the standard of reference chosen to measure any physical quantity. जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आप जो स्टैंडर्ड रेफरेंस लेते हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट. Now French Academy of Science in 1791 introduced a new system of measurement that is called the metric system, in which the different units of physical quantity are related to each other as multiples of the power of 10. Now the improved system of units have been accepted internationally and it's called international, or you also can say the SI units. So you all know that there are the 7 basic units. Now the measurement of temperature. How can you measurement the temperature? Now there are the 3 scales. You all know that: degree Celsius, degree Fahrenheit, and the Kelvin. Now SI unit of temperature is Kelvin. Now you all know that the relation between these means Kelvin and Celsius, Fahrenheit and Celsius, degree Celsius and Fahrenheit and Celsius. Now next is the measurement of volume. Now the SI unit of volume is the meter cube. As you all know, 1 liter is equal to 1000 ml or the 1000 MCQs, centimeter cube, or 1 liter is equal to 1 decimeter cube. Now next is the measurement of mass. Now what is mass? So mass is the quantity of matter contained in the sample. Or in simple language, you can say that amount of matter which is present inside the body. Now that is called the mass. Now it constant and it does not depend upon the place. मास हमेशा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, कभी भी प्लेस पर डिपेंड नहीं करता है वो. चाहे आप उसको अर्थ के कितना ऊपर लेके जाओ, या आप डाउन द अर्थ लेके जाओ, या आप सेंटर पे लेके जाए, चाहे आप पोल्स पे लेके जाए. क्लियर? तो मास ऑलवेज बी कांस्टेंट, but the weight changes according to the
gravity. Now what is weight? Weight is the force. You all know that force F is equal to ma, because the force is equal to weight. So the weight formula is W is equal to mg, where g is the acceleration due to gravity. Now that means weight is the force and it's depend upon the gravity. Now the weight is the force with which the body is attracted towards the earth. उस वेट जिस वेट से बॉडी अर्थ की तरफ क्या होती है, अट्रैक्टेड होती है. It depends upon the acceleration due to gravity. As I have told you, the formula W is equal to mg, where g is the acceleration due to gravity, m is the mass of an object. The mass of object can be determined very accurately in the lab by using balance, maybe analytical balance or the electrical balance. Now the SI unit of mass is kilogram. As all of you know that 1 kg is equal to 1000 gram. Now next is the unit of length. Now SI unit of length is the meter and it is expressed in Armstrong, A naught. Armstrong can be written as A naught. 1 Armstrong is equal to 10 to the power minus 10 meter. Nanometer. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. Picometer. 1 picometer is equal to 10 to the power minus 12 meter. The commonly used physical quantities and the derived units. Now physical quantity and the derived units. So now first your Avogadro hypothesis. Now Berzelius, a Swedish chemist. Berzelius, ठीक है बेटा. बर्जिलस वो साइंटिस्ट था जिन्होंने हमें सबसे पहले ये आइडिया दिया था कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट अ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स. लाइक हाइड्रोजन को हम H लिखते हैं, हीलियम को H ही लिखते हैं. तो सिंबल्स जो आइडिया था वो सबसे पहले किसके अंदर आया था, बर्जिलस के अंदर आया था. Now the Berzelius gives a hypothesis called Berzelius hypothesis which state that, अब Berzelius का hypothesis क्या है, equal volume of all the gases under similar condition of temperature and pressure contain equal number of atoms. This is very much equal to Avogadro hypothesis. Means Avogadro hypothesis says that V is directly proportional to N, where V is the volume of the gas and is the molecules of the gas. Here the volume of the gas directly proportional to the atom. For example, hydrogen plus chlorine gave rise hydrochloric acid. As you all know, hydrogen exists as H2, chlorine exists as Cl2. While balancing the equation, you will get the 2HCl. So you says this, one volume of hydrogen react with one volume of the chlorine and give 2 volume of hydrochloric acid. Now here, as you all know that volume is directly proportional to atom, so we can say an atom of hydrogen react with an atom of chlorine to form 2n number of 2n molecules of hydrochloric acid. Now what this equation says, this implies is that one compound atom of hydrochloric acid is made up of one compound of hydrochloric acid means one HCl molecule, one HCl. As you all know that HCl is made up of half atom of hydrogen and half atom of chlorine. By HCl, because in nature H exists as H2, Cl exists as Cl2, but HCl says I am made up of only one atom of hydrogen and one atom of chlorine. तो डाल्टन तो ये कहते थे कि भाई कभी एटम ब्रेक ही नहीं कर सकते, बट तो एटम ब्रेक भी कर रहे हैं. तो ये दिस इज द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट with Dalton atomic theory, which state that atoms are the ultimate particles of elements and are indivisible. Clear? भी एटम को आप ब्रेक नहीं कर सकते. तो this hypothesis was therefore rejected. Now the next one is Avogadro hypothesis. As you all know that all the gases under similar condition of temperature pressure is equal number of molecules, that is V directly proportional to. And now here this is very important part of the chemistry because you got the questions in your while preparing your JEE exam or NET exam, you will get the question on this topic. Now your number one application of Avogadro law, that it help in the calculation of atomicity of elementary gases. So firstly you know that what is atomicity. Now atomicity means number of atom.
काउंटिंग 1 2 1 एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है. तो दिस इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी. Now atomicity means the number of atom present in a particular formula. For example, H2 कितने एटम है? 2. तो H2 atomicity is 2. Sodium, only sodium, you see that there is just only a one atom of sodium, so you will say that atomicity is 1. The atomicity of elementary substance is defined as the number of atom of elements present in one molecule of the substance. एक molecule substance के अंदर जितने भी atoms हैं और वो atoms हैं कितने, वो क्या कहलाएगी उसकी atomicity. For example, atomicity of oxygen is 2. You know that because the oxygen formula is O2, means 2 atom, and the ozone O3, ozone formula is O3. So that means atomicity is 3. Clear? Now here hydrogen plus oxygen give rise water. You all know that hydrogen plus oxygen give rise water. Now the formula of hydrogen H2, O2 give rise H2 while balancing it. So you all know that 2H2 plus O2 give rise 2H2O. So that you all know that while this we are saying that 2n number of molecules react with n molecules of oxygen to form 2n molecules of water. Now if we divide this throughout the equation by 2n, then you say 1 molecule of hydrogen react with half molecule of oxygen to form 1 molecule of water. So we can say that one water molecule, that you say that H2O made up of 1 molecule of hydrogen and half molecule of oxygen. Clear? 1 molecule हाइड्रोजन का चाहिए और हाफ मॉलिक्यूल किसका चाहिए? ऑक्सीजन का. और यू कैन से हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स 1 atom of oxygen. Clear? So the atomicity of oxygen is 2. Now second, that is how to calculate the molecular mass and the vapor density. As you all know what is vapor. जब भी किसी लिक्विड को हम बॉयल करेंगे, वेपराइज स्टेट में जाएंगे, तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट करता है वो क्या कहलाएगा? आपका वेपर प्रेशर. क्लियर? नाउ व्हाट इज वेपर डेंसिटी? नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी विद द मोलिकुलर मास? नाउ वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास by simple addition of all the atom masses. Now molecular mass is equal to 2 into vapor density. Now third one, by this Avogadro hypothesis, we can solve the relationship between the mass and volume of the gas, that is 22.54 liter of any gas at STP, and this weight equal to the molecular mass of the gas expressed in gram. This is called gram molecular volume. So what this says, ये इक्वेशन क्या कहती है कि 1 mole of any gas, whether you have 1 mole CO2, 1 mole hydrogen gas, 1 mole oxygen gas, they always occupy 22.4 liter. Clear? And this is its volume, and this volume is called gram molecular volume. Now next is atomic and molecular mass. Already told you, atom is very small particle and it can be seen or isolated. Therefore, it is impossible to determine the actual mass. भाई एटम जो है इतना स्मॉल है जिसको हम देख तो सकते ही नहीं. दूसरी बात, इसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते. अब आइसोलेट क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अ एटम हैज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द अदर एटम. क्लियर? तो हाउ कैन वी कैलकुलेट द दिस एक्चुअल मास ऑफ एन एटम? Now हम नहीं कर सकते. Now this problem was finally solved by Avogadro hypothesis. If equal volume of two different gases are taken under similar condition of temperature and pressure. अगर हम इक्वल वॉल्यूम लेते हैं डिफरेंट गैसेस की सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, और फिर आप उसका वेट करते हो, तो इन गैसेस का जो वेट आता है, जो मास आता है, रेशो आता है, वो होल नंबर रेशो आता है. So the actual masses of the atom couldn't be determined, but the relative mass could be determined. If the atomic mass of hydrogen is taken as 1, the relative mass of oxygen is 16. Initially, atomic mass of all the elements were obtained by comparing the mass of hydrogen. भाई पहले क्या करते थे, कोई भी एटम डिस्कवर होगा तो उसको हम रिलेट करते थे एज अ रेफरेंस एटम, एंड द रेफरेंस एटम इज द हाइड्रोजन. क्लियर?
तो बट हाउज इट हैपन, क्योंकि ऐसा करते ही अगर हम एज अ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, अगर हम ऐसा करते हैं तो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कम्स आउट टू बी फ्रैक्शनल, वो हमेशा फ्रैक्शन में आता था, clear, so which is not possible. So the carbon is now, the carbon is taken as the reference atom for the determination of atomic mass. तो बच्चों फिर IUPAC ने क्या करा, हाइड्रोजन को तो हटा दिया एज अ रेफरेंस एटम, फिर किसको ले लिया, कार्बन को एज अ रेफरेंस एटम. अब कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसके मास को अगर हमने कोरिलेट करना है तो हम किसके साथ करेंगे, कार्बन के साथ. अब हेयर वी हैव द प्रॉब्लम दैट कार्बन एग्जिस्ट इन टू आइसोटॉपिक फॉर्म, कार्बन 12 and carbon 14. So we will take carbon 12, not carbon 14. Now the atomic mass of an element is the number of times an atom of the element is heavier than the atom of carbon taken as 12. कि भाई अब हमें क्या कहने लग गए कि जब भी कोई एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें निकालना होगा तो वो कार्बन 12 के आइसोटॉप से कितना हैवी है या कितना लाइट है, तो वो उसका क्या निकलेगा, एटॉमिक मास. नाउ अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गई बच्चों कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप. Now the atomic mass of an element is the average relative mass of its atom. एवरेज मास भी निकाल सकते हैं एज कम्पेयर विद द, अब लेकिन एवरेज किसकी कंपेयर करके निकालेंगे, एटम ऑफ कार्बन 12 taken as 12. Now here the fractional abundance of isotope. You all know that suppose hydrogen, that is hydrogen exists in 3 isotopic one, deuterium, protenium and tritium. Carbon 12 and carbon 14. Fluorine 35 and 37. So here the fractional abundance of an isotope is the fraction of the total number of atoms that is comprised of the particular isotope. Now next is gram atomic mass. Atomic mass of an element expressed in gram. अब यही atomic mass को अगर आप ग्राम में एक्सप्रेस कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे, ग्राम atomic mass. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 AMU, where the AMU is the atomic mass unit. But if you represent in the form of gram, then you will say 16 gram. Now next is the molecular mass. The molecular mass of the substance is the number of times the molecule of a substance is heavier than, same, कि कितने टाइम वो heavier है किससे, an atom of carbon 12, or the molecular mass is equal to the sum of all the atomic masses of all the atom present in one molecule of substance. भाई एक मॉलिक्यूल सब्सटेंस आपको दे रखा तो उसमें जितने भी एटम हैं उन सभी एटम के मास को ऐड करना क्या कहलाएगा आपका, मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल if you calculate the mass of water or the molecular mass of water, now water formula is H2O. Hydrogen mass 1, oxygen mass 16, hydrogen has the number 2. So 1 into 2 plus 16, which is equal to 18. Clear? Now the molecular mass of a substance expressed in gram. Now this is called gram molecular mass. Told you earlier that the gram molecular mass of oxygen is 32 gram. Now here we can explain the mole concept. Now basically mole concept you have to study in the terms of 3, in terms of mass, in terms of number, in terms of volume. So firstly Avogadro number or Avogadro constant, mole, importance of Avogadro number and the mole constant. Now let's start with the Avogadro number or the Avogadro constant. So now what is Avogadro number? Avogadro number क्या कहते हैं, 1 gram atom of any element. अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हो और उसका 1 ग्राम लेते हो तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ एटम होंगे जो किसके अंदर होंगे, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर होंगे, और वो एटम की वैल्यू कितनी होगी 6.022 10⁻23. अब वो कहते हैं कि जनरली हम इसको सिंपली कैसे लिखते हैं 6.022 10⁻23, और इसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, अवोगैड्रो कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज अवोगैड्रो नंबर, ये अगर हम इसको डिफाइन करना तो इस नंबर को डिफाइन करना हो तो
Now this can be defined as the number of atom present in, कितने atom present हैं 1 gram atom of an element, और the number of molecule present in 1 gram molecule. भाई 1 ग्राम एटम लेते हैं तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, या 1 ग्राम मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका अवोगैड्रो नंबर. मोल इज द केमिस्ट यूनिट. जो जनरली जो केमिस्ट होते हैं वो इस यूनिट को लेते हैं बाय काउंटिंग द पार्टिकल्स, क्योंकि उन्हें काउंटिंग करनी है. किसकी काउंटिंग करनी है, पार्टिकल्स की. और पार्टिकल कौन से, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, which represent the value of 6.022 10 to the power 23. Now the mole of hydrogen atom means 6.022 10 to the power 23 atom of hydrogen. मीन्स अगर आप 1 मोल हाइड्रोजन ले लो, 1 मोल हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ले लो, 1 मोल हाइड्रोजन का एटम ले लो, always be equal to 6.022 10 to the power 23. And if you want to take the hydrogen molecule, atom is 6.022 10 to the power 23, but the molecule have the 2 atom. हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 2. Then you will multiply the Avogadro number with 2. Now here the same oxygen molecule, that is 6.022 10 to the power 23. But if you are taking the O2 molecule, then you will multiply the 2 into 6.022 10 to the power 23 atom of oxygen. Now a mole is the amount of substance. मोल क्या है भाई, अमाउंट है सब्सटेंस का, जो किसके इक्वल होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के. इफ द सब्सटेंस इज एटॉमिक और द ग्राम मोलिकुलर मास. भाई अगर एटम ले रहे तो उसके ग्राम एटॉमिक मास के, मॉलिक्यूल ले रहे तो उसके मोल एटॉमिक मास के इक्वल करना. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम, सोडियम एटम 23 ग्राम, ऑक्सीजन एटम 16, बट द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 32. Clear? Water molecule 18 gram, 1 mole CO2 equal to 44 grams. Now this is the in terms of mass. Now here the terms of number. अब मोल को नंबर की टर्म में कैसे डिफाइन करें. Now 1 mole is defined as the amount of substance which contain Avogadro number. भाई आप कुछ भी हो लेकिन उसके अंदर 1 मोल सब्सटेंस लेना, आप चाहे वो कुछ ही हो, उसके अंदर क्या पाएंगे, आपके अवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स. 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू 6.022 10 to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन. सोडियम एटम सेम वैल्यू, ऑक्सीजन एटम सेम वैल्यू, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल सेम वैल्यू. अगर इफ यू वांट टू टेक वाटर, सेम वैल्यू, 6.022 10 to the power 23 molecules of water. So here is the in terms of number. Now next is the in terms of volume. Now in case of gases, mole concept has to be calculated by the in terms of volume. Now what is in terms of volume? Mole is the amount of gas which has a volume of 22.4 liter at STP. So you will take any gas, whether it is oxygen gas, carbon dioxide gas, always be equal to ammonia gas, and that always be equal to 22.4 liter of oxygen at STP. Now a mole of ionic compounds is the amount of substance which has mass equal to ग्राम फॉर्मूला मास, जिसका मास किसके इक्वल होगा, ग्राम फॉर्मूला मास के, विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ द फॉर्मूला यूनिट. फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 gram of NaCl. You know that where this values comes from, that sodium plus chlorine, sodium mass 23, chlorine mass 35.5, the total is 58.5. So 1 mole NaCl is equal to 6.022 10 to the power 23 formula units of NaCl, in which 6.022 10 to the power 23 sodium atom है and plus 6.022 10 to the power 23 फ्लोराइड आयंस है. ठीक है. नाउ अब हमने पढ़ लिया, हमने पूरा अवोगैड्रो कंसेप्ट पढ़ा. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस अवोगैड्रो नंबर और द मोल कंसेप्ट in the calculation of the actual mass of a single atom. So by this mole concept, you can calculate the actual mass of single atom or a single molecule. एक single atom हो या single molecule हो, हम आराम से निकाल सकते हैं उसका mass. Second, in calculate the number of atom molecules in a given mass of a element. Suppose आपको given mass दे दिया गया कि भाई आपके पास इतने ग्राम कोई भी एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो.
You can also calculate the number of molecules. अगर आपको given volume of the gas पता है तो you can easily calculate the number of molecules in the given volume of the gas. In the calculation of the size of individual atom and molecule, assuming them to be the spherical. अगर आपको size निकालना है किसी भी individual atom और molecule का, तो मैं assume करना है the particles जो है वो molecule या फिर atom क्या है, spherical shape का है. तो in the actual mass of one atomic mass or one unit, one atomic mass unit is equal to 1.6 into 10 to the power minus 24 gram, or in case of kg, 1.6 into 10 to the power minus 27 kg. I hope, students, you will understand the concept mole Avogadro hypothesis now. Okay, I hope you understand it. Okay, bye bye.